Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Hey guys, so welcome back to my another YouTube video. In this video we are having this Mahindra Jeep, which is fully converted to Ford GPW 1942. You can have a look at the vehicle. It is pin to pin completely restored, fitted with a 2013 model Bolero Turbo DI engine, mated with a 5-speed Bolero gearbox, which is NGT 520, and you can have a look over it. बिल्कुल इसको एक एक्चुअल फोर्ड GPW का लुक दिया गया है। जहाँ तक हो सका है पार्ट्स भी जो एसेसरीज़ लगी हैं वो भी ओरिजिनल यूज़ करी हैं। इसके बाद इसको राइट हैंड ही रखा गया है क्योंकि आपको कुछ चलाने में प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट वी हैव द फोर्ड GPW ग्रिल एंड अ लो बॉनेट। इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी ओरिजिनल हैं, आप देख सकते हैं। ये चेजिस में ये प्लेट्स ऐड करी गई हैं टू एनहेंस द लुक। ये ओरिजिनल फोर्ड GPW में ऐसा ही आता था, ये आप देख सकते हैं। वी हैव अ स्टीयरिंग बॉक्स फ्रॉम बोलेरो का मैनुअल जो स्टीयरिंग बॉक्स है लॉन्ग, बिल्कुल पावर स्टीयरिंग की तरह ही काम करता है ये 16 टायर्स पे, बट ये मैनुअल होता है। वी हैव दिस कूलेंट बॉटल ओवर हेयर। Coming to this side, we get this original accessory. You can see USA embossed on it. We have this another blackout light over here. You can see the logo. Every electrical and every light of this vehicle is working. Even these blackout lamps are working fine. We get a Jeep badging over here. This is fitted with YST Cross Country 616 tires. इनके लिए एक और ऑप्शन होता है, MRF के डाल सकते हैं, बट इनका जो राउंड कॉर्नर्स ग्रिप होता है वो बहुत अच्छा लगता है। ये पूरी एसेसरीज हैंडक्राफ्ट करी गई हैं and these are of very good quality. Coming to the steering wheel, ये इसका 3-spoke steering wheel है, and the clutch and the brake are boosters. दबने वाले नहीं हैं, ये hanging pedals हैं। It is fitted with both master and clutch slash cylinder in the clutch, and it is fitted with brake booster. ये इसका हैंड ब्रेक है, ऑल 5 मीटर्स फंक्शनिंग है, एंड दैट साइड अपनी कॉशन प्लेट्स हैं। You can have a look over the seats. On coming to the other side, we have the fuel tank. जो सीट रिमूव करके इसका फ्यूल फिलअप जो है वो इधर से होता है, ये उधर से ओपन हो जाता है।
सीट के नीचे से। इसका फ्यूल टैंक ये बड़ा है, इधर भी है, और ये एक्सटेंशन है नीचे इसका। ये इसका गन स्टैंड है, इसके ऊपर एक गन फिट होती थी। कमिंग टू द रियर ऑफ द व्हीकल, ये सीट्स दोनों ऐसे रिमूव हो जाती हैं, ये स्ट्रैप के थ्रू ऐसी रहती हैं। और इधर अपने बॉक्स हैं, एमिनेशन बॉक्स हैं इधर, आप देख सकते हैं। इधर से एक गन का जो बेल्ट है कार्टेजेस का, वो उधर गन पे जाके फिट होता था। और वी हैव द सेम ऑन द अदर साइड, इधर से गन जाती थी और उधर से जो खाली शेल्स होते थे वो उस बॉक्स में जाते थे। You can have a look from the back. We have a spare tire over here and this is jerry can, इसमें अपन एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर सकते हैं। पूरी जो एसेसरीज़ हैं, ये जो लाइट्स वगैरह हैं, ये सब वर्किंग कंडीशन में है। इंडिकेटर्स वगैरह सब। इधर से भी आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं। This thing feels so vintage and the drive quality is of a new vehicle because it is fitted with a Turbo DI, Mahindra Turbo DI 2.5 liter engine. Top speed of this Jeep is around 110 kilometers per hour. Also we have this accessory, the trolley for this Jeep. But now we will be focusing on this thing. We have a gun stand placed over here. The rear differential is double bearing, so no matter how much you put the weight onto it, this thing is never gonna fail. This is a double bearing differential. Coming to the machinery, we have this lubrication order box fabricated. You can look at the overall condition of this. This is the 2013 Bolero Turbo DI engine. गाड़ी का हुड भी कंप्लीट रखा हुआ है। इसका आप पीछे हुड का मैकेनिज्म देख सकते हैं, ये लगा हुआ है, लग के हुड भी लग जाता है। बट ये ओपन ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको अभी ओपन करके रखा हुआ है। एंड इसमें ये वाला ऑप्शन और है कि आपकी विंड स्क्रीन पूरी फोल्ड हो जाती है। सो दिस थिंग विल लुक लाइक दिस। On coming to the starting of vehicle, we have a switch over here. We have to turn this on. Then we have a switch over here. Once the battery light is on, we have the foot starter installed. You can see I will just press my foot and the engine will crank up. You can feel the rhythm of the sound. Also, you will be able to hear a turbo whine coming.
The gear shift is also small. You can see this is first, this is second. Not like the normal Jeeps कि आपको ऐसे करके इधर फर्स्ट आता है, इधर सेकंड आता है. इसका बहुत छोटा gear shift है. This is first, this is second, this is third, this is fourth and this is fifth. ओके गाइस, सो अगर आप ऐसी जीप अपने लिए बिल्ड करवाना चाहते हैं और अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि कुछ अदर मॉडिफिकेशंस की, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. तो हम वैसी जीप आपके लिए ऑर्डर बेसिस पे रेडी कर देंगे. दिस थिंग कॉस्ट नियरली अराउंड 4 lakhs to 4.25 lakhs. स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करके और डिटेल्स गेन कर सकते हैं. एंड दिस थिंग इज़ टोटली स्ट्रीट लीगल. As you can see, it is fitted with HSRP high security registration plates and the validity of this vehicle is around 2028 and after 2028 it can be re-renewed, so there is no trouble. Street legal है ये पूरी 100%. आपको कोई पुलिस परेशान नहीं करेगी. Insurance, PUC and the validity of the registration is everything is valid. Okay guys, I hope you liked watching this video. If you liked it, give it a like and do subscribe to my channel. This is Adnan Khan signing off.